Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are doing chapter number 2, Numerical Problems, 2.5 to 2.8. So let's start. A cricket ball is hit upward. एक क्रिकेट बॉल को ऊपर की तरफ हिट किया गया है with velocity of 20 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड के साथ VI 20 meter per second and at an angle of 45 degree with the ground, and we have to find time of flight. डिफाइन करना है. मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड लेट इट बी x. ये हमने फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल E, टाइम ऑफ फ्लाइट. फार्मूला you use, 2VI sin थीटा over G. टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला now 2VI 20 sin 45 divided by G 9.8. 2 into 20 sin 45, 0.707 divided by 9.8. कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करें तो इट कम्स आउट टू बी 2.88. 2.88 second, and you can write it 2.9 seconds. So time of flight is 2.9 second. Second one is maximum height, h. H is equal to VI square sin square theta divided by 2G. फार्मूले आपको याद करना होंगे. VI स्क्वायर 20 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 2 9.8. 20 का स्क्वायर 400 sin 45 0.707 and its square divided by 9.8 into 2, it comes out to be 19.6. और इसके बाद you will have to use calculator and it comes out to be 10.2 meters. Now C. C is horizontal distance covered. Range R. रेंज का फार्मूला VI स्क्वायर ओवर G साइन 2 थीटा. VI स्क्वायर ओवर G साइन 2 थीटा. VI स्क्वायर 20 का स्क्वायर साइन 2 into 45 दैट इज साइन 90 साइन 91 होता है और ये G 9.8 and this will be 400 साइन 91 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 9.8. कैलकुलेटर की मदद से
400 को 9.8 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 40.8. Let's use the calculator. 400 divided by 9.8, 40.8. You may write it as 41 meter. So the range is 41 meter. Now 2.6. A 20-gram ball, एक बाल जिसका मैस 20 ग्राम, (2.6) mass 20 gram. A 20-gram ball hits the wall of a squash court. एक स्क्वाश कोर्ट को ये हिट करता है with the constant force of 50 Newton. F is equal to 50 Newton if the time of impact is 0.50 second. Time of impact 0.50 second. Find the impulse. You have to find impulse, and you know I is equal to F into T. F is 50 and T is 0.50. You multiply, comes out to be 25 unit, same as that of momentum, Newton second. So impulse acting on the ball is 25 Newton. 2.7. A ball is kicked by a footballer. एक फुटबॉल प्लेयर ने एक बॉल को किक किया है. The average force on the ball is 240 Newton. इसके ऊपर जो एवरेज फोर्स लग रही है that is 240 Newton. F is equal to 240 Newton. And the time of impact, that is 0.25 second. And what are you to find? Calculate change in momentum. Change in momentum. ये आपने फाइंड करना है. And B, direction of change in momentum. Direction of change in momentum. Let's solve. Rate of change of momentum is equal to the net force acting on the body, and the change in momentum is equal to impulse. Using F into T is equal to change in momentum.
So change in momentum is equal to F into T, 240 into 0.25. It comes out to be 60. This is the change in momentum. Unit same, kilogram meter per second or Newton second. B, direction of change in momentum is the direction of force. Direction of change in momentum is the direction, जिस डायरेक्शन में फुटबॉलर ने बॉल को हिट किया है वही इसकी डायरेक्शन होगी. Direction of change in momentum is same as direction of force. Then 2.8. 2.8. An aeroplane is moving horizontally. एक एरोप्लेन हॉरिजेंटली मूव कर रहा है एट अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द इनिशियल हॉरिजेंटल स्पीड VIX, 200 meter per second at an height of 8 किलोमीटर. हाइट है इसकी 8 किलोमीटर, 8000 मीटर. To drop a bomb on a target, find horizontal distance from the target at which the bomb should be released. Horizontal distance, कितने फासले से बम को छोड़ना चाहिए, ये हमने डिटरमिन करना है. This is the height. यहां से बम को छोड़ना है और ये बम इस तरह से प्रोजेक्टाइल बनाता हुआ नीचे गिरेगा. यहां पर ये इसकी VIX है और इस पॉइंट पर ये इसकी VIY नीचे की तरफ ये 0 है और A ऊपर से नीचे आते हुए G के बराबर होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम मालूम करने के लिए हम इसकी ये वर्टिकल मोशन कंसिडर करेंगे. कंसिडरिंग इट्स वर्टिकल मोशन. और इक्वेशन कौन सी इस्तेमाल करेंगे? S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर. S यहां पर H होगा 8000 मीटर, VIY ऊपर से नीचे आते हुए 0, 1/2 A इज इक्वल टू G 9.8 एंड T स्क्वायर. A को G के बराबर पुट करना है और जो VI है दैट इज VIY इज इक्वल टू 0 के बराबर पुट करना है. एंड नाउ इट बिकम्स 8000, 4.9
टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8000 डिवाइडेड बाय 4.9। अब हमने कैलकुलेटर की मदद से 8000 को 4.9 के ऊपर डिवाइड करेंगे। सो दिस विल बी, इफ यू सी, 8000 divided by 4.9, 1632.6. If you can see, this will be second square, and t इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा 40.4 सेकेंड। इतना टाइम लगेगा इसको ऊपर से नीचे आने में। नाउ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, x इज इक्वल टू VIX into t, that is VIX, that is 200 meter per second, sorry, only 200 into t is 40.4, 200 को 40.4 से मल्टीप्लाई करें, सो दिस इज 8080 मीटर। किलोमीटर बनाएं, 8.08 किलोमीटर। तो इसके साथ ही ये 2.8 तक हमारे न्यूमेरिकल्स खत्म होते हैं और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।